वो तो मतलब जब आप बचपन में छोटे थे आप उस टाइम पे देयर वाज समबडी हु इज वेरी फेमस फ्रॉम जर्मनी, जिसके नाम पे जर्मनी का बहुत खराब नाम है, पीपल नो बैड अबाउट हिम। कौन है वो? हिटलर। हिटलर। Yes, that's right. It's called Hitler. Adolf Hitler. Okay. So the Adolf Hitler, we all know that the great ruler of Germany, and for that reason, we all know that for him only the World War II happened. He was a great and arrogant at the same time. He's very autocratic leader who has killed 30 लाख ज्यूइश, जो अभी जीव कम्युनिटी जो हमारे इज़राइल में है, पहले ज्यूज पहले पूरे यूरोप में फैला हुआ था, आज भी फैला हुआ है। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया में दीज आर द सुपीरियर पीपल। ओके, एंड व्हेन हिटलर केम टू द पावर ही टोल्ड दैट नाजी आर्मी विल नॉट okay, just hold on, people are asking for link, why they are asking for link? Just hold on people। एक बार रुक जाओ बस, वेट वेट वेट। Okay, I've sent the link. People are saying that didn't got the link. Okay, so the people, okay, so Germany, we all know that the Adolf Hitler was a person, he used to say that इस दुनिया में अगर कोई इंसान है तो वो जर्मन है। Rest all the people like Hindu, like Christian, like Muslims, they all are inferior quality people. So that's why he killed 330 lakh Jewish community people by putting them in the if you don't know or don't know, in the concentration camp। concentration camp क्या होता है? एक ऐसा कैंप जहाँ पे सबको डाला जाता है, and then they used to torture them, and at the same time they also killed them। so they killed these Jews by putting gas chambers, जहरीले गैस डाल के इन सारे ज्यूस को खत्म कर दिया था, 30 लाख ज्यूस कम्युनिटी के लोगों को। There was a concentration camp in Auschwitz and there was a concentration camp in Birkenau। These are the two places in Poland and Australia where still if you go, it's a famous tourist place nowadays। So Auschwitz and the Birkenau are the two concentration camp where he put the people and put them gas chambers and switch on the gas and they killed even kids also। छोटे छोटे बच्चों बूढ़ों सब लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया था। It is also known as the Red Army, the Nazi army। Netaji Subhash Chandra Bose was one of the freedom fighter who went to seek the help from this Adolf Hitler। But you know, Hitler always feel that the Hindu are the inferior quality people। You know, there was a book by Adolf Hitler called the Main Camp। Main Camp was a book where he written lots of bad words about the Indian people। They say they are the slaves, they don't fight against the British, and instead they are following their orders and all of it। So they say that Indians should be worked like a slave. And this words has created lots of bad impact, and that's why Subhash Chandra Bose decided to leave him and he went to the Japan। This was the story, and we all know that when the United Forces of America and England, British arrived at, जब ये लोग आ गए थे जर्मनी में,
they destroyed the entire city of Berlin, and they divided Germany with two parts. One is East Germany and one is West Germany. The and they also build up, there is something called wall which is known as a Berlin Wall. So Berlin Wall के जरिए जर्मनी को इन्होंने दो तरह से डिवाइड कर दिया था. One was East Germany, the capital was Berlin, and one is West Germany जिसका कैपिटल आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, सुन लीजिए और जान लीजिए. It was known as a Bonn, Bonn. Then in 1990, when Angela Merkel, the present chancellor or the president of Germany, she decided to join the Germany again, and then Germany joined, and then after that, now we know that United Germany capital is known as a Berlin. So it says that if you want to fight, or if you want to fight a war, be like Germans, because Germans are the people who have faced a huge rise and fall in their life. So basically they started the war. मतलब ये कहा जाता है कि जर्मन एक ऐसा कैरेक्टर है, जब शेर को गोली लगता है, जब एक टाइगर को गोली लगता है, तो टाइगर सबसे ज्यादा फेरोशियस हो जाता है. And that tiger cannot be stopped by even the best hunters of the world. इसलिए हंटर्स हमेशा ये बोलते हैं कि टाइगर को मारना है तो हमेशा दो गोली मारिए, कि एक गोली खाने के बाद टाइगर जैसा भयंकर कैरेक्टर दुनिया में नहीं हो सकता है. So that's how the Germans are, really dangerous people on the planet and very strong-minded people. So we all know that German is famous for our great beers. You can take a look. What is the name of that festival that happens in Germany? Beer festival? People, come on. The beer festival in Germany. अरे बाप रे, सब कहाँ गए? सो गए सब? हेलो हेलो पीपल, वेयर आर यू? अच्छा चलो चलो चलो, है कोई है, ठीक है. हाँ तो पीपल, कैन यू सी एवरीथिंग ना? अच्छा, तो what is the famous beer festival that happened in Germany? What is the famous beer festival happens in Germany? Oktoberfest. Yes, that's right. It's called Oktoberfest, that happens in the city of Munich. Okay, so Germans are known for their great quality of the beers. Okay, also German known for this one. ये क्या है? कोई बोल सकता है देख के? Sausage. That's right. Yes, Germany is also known as a great world of sausage. Who is this person who is answering the question? Devraj Manna. Acha, that's right. Okay. So Germany is also known for great quality of sausages. The best sausage come from Germany, but they never make sausage out of chicken. They always make the sausage out of beef and pork. And there is something called black pudding sausage. There is something called Brat show. There is a great sausages that come from the area. Also, people, please, जो यहाँ पे food production में interested है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, there is a famous cabbage, pickled cabbage that come from Germany. Can anybody say? जिसने इस आंसर को बोल दिया उसका तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग पक्का है. What is that famous pickled cabbage that come from Germany? It's called sauerkraut. It's called sauerkraut. The sauerkraut is a famous pickled cabbage that comes from the region of Germany. I repeat the word again, sauerkraut. Okay, right? Okay. So please, when you complete this class, go to the Google and type out all this thing, and please check whether I'm telling you the right thing or not. Okay, who is this great personality from Germany? कौन बोल सकता है? Klose. Yes, that's right. He is known as a Miroslav Klose, the highest goal scorer in the World Cup. In the World Cup, previously Ronaldo from Brazil used to be the highest goal scorer, but in 2018 he broke all the record. In 2014, when Germany beat Argentina in the final at
Brazil, Rio de Janeiro. That time he scored the goal. Sorry, he didn't score the goal, but that time he become the highest goal scorer of the World Cup. Okay, right? Okay. Now, Germany is also famous for this one. क्या है ये? BMW. Audi. Yes. No, that's BMW. Take a look at the logo. Logo को सही से देखिए. It's called BMW. So BMW is the car which manufactured from the country of Germany, the famous luxurious car on the planet that also comes from Germany. Yes, Audi basically is from Germany, but Poland also claimed that we also be a part of it. Okay, right? Okay. So BMW is also a famous car company that comes from Germany. So Germany is a land of great quality of beer and also the fantastic scenic beauty also there. Okay. And Germany से हमें एक केक मिलता है. हम बर्थडे के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे उस केक को बहुत खाते हैं. व्हाइट कलर का देखने को होता है एंड देयर इज अ चॉकलेट शेविंग्स ऑन द टॉप. क्या नाम है उस केक का? बहुत सारे बेकर्स है हमारे पास, ग्रेट बेकर्स विद अस. कैन एनीबॉडी टेल? व्हाइट कलर का होता है, ऊपर एक लाल रंग का चेरी होता है एंड देन देयर इज अ चॉकलेट शेविंग्स ऑन टॉप. क्या नाम है उस केक का? It's very famous cake. Birthday, Christmas. Black. Yeah, please. Who is that lady? Black Forest. The Kavya. Okay, yes, Kavya, please go ahead. Black Forest. Yes, that's right. Black Forest. Yes, yes. There was somebody also trying to say something I didn't hear. Okay. Yeah, जो भी है, तो both the answers are correct. It's called Black Forest. So Black Forest in Germany, there is a mountainous region. There is a mountainous region in Black Forest named Black Forest, and the Germany is named after that. That cake is named after that actually, because why it is named so? Because Black Forest is a mountain in Germany where there is a snow, white color snow, that is the cream of the cake. Sorry, that is the white color of the cream of the cake, and there is a black colored chocolate shavings. So that chocolates is a hill. So hill is obviously we know that अगर पहाड़ के ऊपर बर्फ नहीं होता है तो पहाड़ का जो रंग है वो हो जाता है ग्रीन या फिर डार्क ग्रीन. And on that, if snow is fall, then it will look like what? Look like somebody has put a cream on it, whipped cream on it. So that's how the name came. It's called Black Forest. So Black Forest is a mountainous region in Germany from where this cake actually come. Okay? लेकिन हाँ, Black Forest के आइस से कभी Black Forest नहीं बनता है, उसका कोई नाम नहीं है. लेकिन Black Forest केक को बनाया जाता है just of looking at the Black Forest mountain in Germany. That's it. ठीक है? चलिए, this is about the Germany, a basic introduction for the hotel management people. And now we will enter the worst part, the wines of Germany. Okay, so I know that after this class start, people will start to leave the class because the word that I'm going to say right now is really going to be I mean, like we're going to act as an atomic bomb in your ears. So please people, it is nothing so bad. Some of my teacher in 2008 at IHM Hyderabad, in the class he प्रोनाउंस दिस वर्ड्स. तब हमारे पास वो छोटा सा नोकिया 1100 का फोन हुआ करता था, एंड जब वो टीचर ऐसे प्रोनाउंस करता था हम उसको वॉइस रिकॉर्ड करके रखते थे, बिकॉज उस टाइम तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था नहीं ना. सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम दैट व्हेन वी गो बैक टू होम वी लिसन टू हिज वर्ड्स ओनली. मैंने इसको YouTube में अपलोड कर रखा है. प्लीज इस लेक्चर को देखिएगा वहां पे जाके, नहीं तो आपके दिमाग में ये वर्ड्स छपेगा नहीं. एंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फूड एंड बेवरेज, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट? ओके, एंड इफ यू डोंट प्रोनाउंस प्रॉपरली यू विल नॉट एबल टू नो द वर्ड्स. नाउ जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट जर्मनी वाइन्स जो है, दिस वाइन्स, जर्मनी बेसिकली produces all good quality of white wines. France and Italy will make great red wines, but Germany makes white wines because Germany is a cooler climate, and in the cooler climate what happened, red wine बनाने के लिए आपको थोड़ा सा गर्मी की जरूरत पड़ जाती है, but here it is not possible. That's why lots of mountains are there. That's the reason Germany produce always a cool red white wine. ठीक है? So let's start. People, please
put your earplugs on your ear and listen to these words. So first we will learn about the wine laws of Germany. You know, this is the tough only. यही थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, इसके बाद थोड़ा सा आसान है. So wine laws of Germany. Germany के wine law में दो classification है. One is table wine and one is quality wine. Simple भाषा में. Table wine means as simple as that, red, white, rose, जो normal grape से बनता है. इसके बाद आता है क्वालिटी वाइन. क्वालिटी वाइन का मतलब है जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल आर स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर द मार्केट डिमांड. उनको जर्मनी क्या करता है कि उनको मॉडिफाई करके उस लेवल पे लेके जाता है जहां से इसको मार्केट में सेल हो सके. So the first wine law that we have is table wine, or we also call it Tafel wine. Listen to these words carefully. Tafel wine, very easy. इसके बाद वाइन को क्लासिफाई किया जाता है टू पार्ट्स में. वन इज Deutscher Tafel wine and Deutscher Land wine. I repeat again. It's called Deutscher Tafel wine and Deutscher Land wine. It's not land wine. If German speaks, they will say Deutscher Land wine. So now, what is Deutscher Land wine? People, I think somebody wants to join this. Let's see. Yeah, so Mr. Mohod want to join. Okay. So now there is something called Deutscher Tafel wine and there is something called Deutscher Land wine. You know, there is a famous bank from Germany known as a Deutsche Bank. So Germany is also known as a Deutschland. Same way, there is something called Deutscher Tafel wine and Deutscher Land wine. Now what is Deutscher Tafel wine? It makes the, यहाँ पे आपको simple कहानी लिखना है. It makes a basic table wine which grows in the country and it is also consumed in the country, and at the same time Germany में जो table wine होता है, the Tafel wines can be blend with the grapes from other country. It means that if you want to make a wine and after that you decide, जर्मन कोई वाइन मेकर ने ये सोचा कि मुझे इस वाइन को फ्रेंच ग्रेप के साथ ब्लेंड करना है, दिस इज द ओनली कंट्री ऑन द वर्ल्ड दैट अलाउज. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका डॉयशर लैंड वाइन. लैंड वाइन में क्या होता है? दीज आर ऑल नॉर्मल लैंड वाइन, वन सेकेंड, लाइक अ टेबल वाइन ऑल्सो, बट इट इज अ 17 डेजिग्नेटेड एरिया. 17 डेजिग्नेटेड एरिया जहां पे ये लैंड वाइन ही प्रोड्यूस होगा, वहां पे और कुछ नहीं होगा. ठीक है. Followed by the next one that come is known as a Qualitäts wine. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ लगने वाला है. So look at this pronunciation. It is known as a Qualitäts wine. I repeat again, Qualitäts wine. It's not wine. It's called Qualitäts wine. Qualitäts wine. Like swine, we all know. That same way, Qualitäts wine. So that's called quality wine. Under the Qualitäts wine, there is two classification. Now, this is going to be really interesting. The first one is known as Qualitäts wine. The first one is known as Qualitäts wine Bestimmter Anbaugebiet. I repeat again, Qualitäts wine Bestimmter Anbaugebiet. Qualitäts wine Bestimmter Anbaugebiet. This is our better quality wine than the table wine. It has got 13 designated area and this comes from the regions known as a Einzillag or Grosslage. Now what is Grosslage and what is Einzillag? जैसे फ्रांस में होता है शातो, शातो मतलब वाइनयार्ड, सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड Einzillag or Grosslage. Okay. इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आता है, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन व्हिच इज सोल्ड इन द फॉरेन मार्केट. इट्स नोन एज Qualitäts mit Prädikat. It's called Qualitäts mit Prädikat. Qualitäts mit Prädikat. Now in the Prädikat style there are also 6 different types of classification. 6 different types यहाँ पे है. इनमें से जो पहला टाइप आता है that is known as your Kabinett. So the first one that is known, it is known as your Kabinett. So Kabinett is going to be the German wine which is kept in under the cupboards or the cabinets.
जहाँ पे जैसे हमारा जैसे घर में अलमारी होता है, अलमारी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जर्मनी में क्या होता था कि वाइन मैन्युफैक्चर के बाद उसके अंदर इस वाइन को रख दिया जाता था। एंड these are very lightest quality of wine. This can be white or this can be red. This is known as a cabinet. जो मैन्युफैक्चर के बाद लोग अपने घर में अलमारी के अंदर रखना है, यही आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। Followed by the next one is Spätlese. Spätlese is known as a Germany sweet version, very sweet version. Now this is sweet, not very sweet. It is made from ripe grapes. इसका मतलब है कि वही सेम कहानी, आम जब पक जाएगा, आम जब पक जाएगा then it will turn into a sweet wine. Same way जैसे ग्रेप पक जाएगा, ग्रेप से आपकी स्वीट वाइन बनेगी. That's the classification is known as a Spätlese. Another classification which is slightly sweeter, which is known as a Auslese. So Spätlese, Auslese. Auslese is also manufactured from the late harvested sugar enriched grape. मतलब शुगर जहां पे ज्यादा होता है वहां से ये बनता है. The fourth one is known as, so first one is Auslese. Now the next one is Beer-Nos-Lese. 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 Beer, normal beer we have, and there is something called Nos and there is something called Lese. So Beer-Nos-Lese. Now Beer-Nos-Lese में क्या होता है? They don't allow the grape to ripe, but they allow it to affect with Botrytis cinerea. क्या है ये Botrytis cinerea? No, anybody can say? Botrytis cinerea क्या है? सबको मालूम है? Noble rot. That's right. It's called noble rot. Fantastic, Devraj. This is called noble rot or Botrytis cinerea. In Germany, it is also known as Pure Tiro Nobel. Germany में noble rot को कहा जाता है Pure Tiro Nobel. Okay, right? That's called Beardness Auslese. And next we have Trocken Beernos Auslese. I repeat again, very simple thing. Trocken Beernos Lese. Trocken Beernos Lese. Another great quality of noble rot affected grape. Now Beardness Auslese भी noble rot affected है and Trocken Beardness Auslese भी noble rot affected है. But difference क्या है? The Trocken Beardness Auslese creates a very thick and sugar. Trocken Beardness Auslese खाने से कोई ऐसा लगेगा आपको कि पीने से ऐसा लगेगा आपको कि किसी ने रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन के चाशनी जो है, चाशनी के अंदर किसी ने वोडका ऐड कर दिया है. तो जब आप वोडका चाशनी के अंदर ऐड करोगे तो यू विल फील लाइक व्हाट, यू कांट सी द वोडका, बट व्हेन यू ड्रिंक इट, व्हेन यू ड्रिंक दैट चाशनी, यू फील लाइक ओके देयर इज सम अल्कोहल. इट इज द मोस्ट स्वीट वाइन, द very sweetest wine on the planet. Trocken Beernos Auslese. सिंपल भाषा में कोई अगर आपसे पूछे कि बियर्डनेस आउसलेसे और ट्रोकेन बियर्डनेस आउसलेसे में क्या डिफरेंस है, इज अ very थिक क्वालिटी ऑफ वाइन. सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला के चाशनी के अंदर अगर आपने वोडका ऐड कर दिया तो आपको जो फील होगा दैट इज एब्सोल्युटली लुक्स लाइक अ Trocken Beernos Auslese. So that's how the thing came. Now the final category in this segment is known as ice wine, E-I-S-W-E-I. You can take a look at the picture, what is happened here. What happened, generally we know that the extreme cold and extreme hot temperature is bad for wine. But here the wine manufacturer used the different concept. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली दे अलाउ द, यू कैन टेक, जो पहले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा दैट ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स के ऊपर आइस जम गया है, बर्फ गिरने के बाद आइस जम गया है. एंड नाउ यू कैन टेक ए लुक दैट आइस जमने के बाद क्या होगा, ग्रेप जम जाएगा. ग्रेप का जो स्किन है, ग्रेप के अंदर जो जूस है, वो सब जम के क्रिस्टल आइस बन जाएगा. एंड इफ यू फ्रीज, और उसी फ्रीज्ड ग्रेप जो है -8 डिग्री सेल्सियस में, उसी फ्रीज गैप को अगर आप हार्वेस्ट करने के बाद इफ यू मेक अ जूस आउट ऑफ इट, दैट वाइन विल आल्सो टर्न इनटू अ स्वीट क्वालिटी ऑफ वाइन. बट यस, it is not as sweet as Trocken Beernes Auslese, but the question is that this is a very interesting and very critical manufacturing style. इसलिए क्या होता है कि इसको इतना फेमस किया जाता है. एंड देन साइड में आप देख सकते हो, ये एक ओनली आइस वाइन वैरायटी है जो रात के अंधेरे में फ्लड लाइट ऑन करके, फ्लड लाइट ऑन करके ये लोग यहाँ पे इस ग्रेप्स को हार्वेस्ट कर रहा है. ये देखिए, ये आदमी सब लोग यहाँ पे ग्रेप्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं.
So this is basically known as a ice wine. So basically your sugar get crystallized, and when you make the wine, because here the grape is not affected by noble rot or the grape is not affected by over ripened grape, तो स्वीट करने का इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला, which is that let the grape to freeze, grape को जम जाने दो, after that उस freezed grape से we will make the juice and the juice will turn into a I mean like your red wine or white wine, जो भी है, ठीक है. So once again people please listen, and this is going to be the last one. Deutscher Tafel, देखो इसके अंदर जो मैंने लिखा है ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आराम से आप लिख लोगे, मुझे पता है ये तो सेम कहानी है, लेकिन जो एग्जामिनर अगर पेपर में जो आपसे चेक करेगा whenever there is a ऑफलाइन एग्जाम जब होगा, वो आपकी स्पेलिंग चेक करेगा, इस स्पेलिंग को ध्यान से रखना. इट्स कॉल्ड Deutscher Tafelwein, Deutscher Landwein. इसके बाद आता है Qualitäts Wein Bestimmter Anbaugebiet और QBA, followed by under that there is another classification known as Qualitäts mit Prädikat, and under the Prädikat wines there is something called Kabinett, Spätlese, Auslese, Biernoslese, Trockenbiernes Auslese, and also our बेसिकली एक बात को समझ में रखिए, जर्मन वाइन को अगर आपको पढ़ना है, आपके नाम को याद रखना है, देन यू नीड टू वॉच द बुंदेसलीगा. सो बुंदेसलीगा इज बेसिकली अ जर्मन फुटबॉल लीग, लाइक हमारे देश में जैसे हीरो आईएसएल होता है, स्पेन में जैसे होता है आपका ला लीगा, सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड बुंदेसलीगा. एंड व्हेन यू वॉच द बुंदेसलीगा, व्हेन यू see those German, because I am a very football fan, so I watch these people, so मेरे लिए नाम इतना टफ नहीं लगता है, because I know all these German football players. There is something called Michel Ballack, there is something called क्या नाम है उनका, Miroslav Klose, there is something called Lukas Podolski, ठीक है, there is something called क्या नाम है उसका, Bastian Schweinsteiger. These are the great footballers. Francis Beckenbauer. So these names, when you read these names, जब आप ये players के नाम आपको याद रहेगा, this will become very easy for you. पर चलिए ठीक है, फुटबॉल सबकी इंटरेस्ट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको फुटबॉल ही देखना है वाइन पढ़ने के लिए. आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छी तरह से देख लेना, वहां पे ये प्रोनाउंसिएशन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा. ऑलराइट, तो ये था आपके जर्मन वाइन लॉ. अब हम आएंगे जर्मनी में क्या क्या ग्रेप वैरायटी होता है, आफ्टर दैट जर्मन वाइन रीजन्स. नाउ इट इज स्लाइटली ओके. So this is our grapes that happens to be found in Germany. Riesling is a great grape from Germany, and Riesling is a grape which is predominantly available in Germany, and 85% of German white grapes are Riesling. And it is also the famous grape in Germany also, because maximum people is Riesling से बनाता है. Let's take an example. हमारे देश में जैसे गेहूं चावल, कोई भी आप स्टेट में पहुंच जाइए, कोई भी स्टेट में, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर राजस्थान हो, आपको गेहूं और चावल आपको दिखाई देगा. सेम वे Riesling is a star of all grape. Okay, and it is basically come from the wine regions of Moselle, Rheingau. हम इसके बारे में जानेंगे आगे जाके. इसके बाद नेक्स्ट वन इज मुलर थुरगांव. क्या नाम है इसका? इसका नाम है मुलर थुरगांव. आई रिपीट अगेन, मुलर थुरगांव. सो मुलर थुरगांव इज अ जर्मनीज एवरीडे वाइन. मतलब हर घर पे, मतलब लाइक जब ये घर पे रोटी या चावल जब बनाते हैं जर्मन्स, उसके साथ इन लोगों ने चलो लेट्स हैव सम मुलर थुरगांव ग्रेप्स, या फिर जैसे कि आप जैसे सुबह उठ के जैसे ग्रेप्स खाते हो एज इन ब्रेकफास्ट, दे आल्सो कंज्यूम दिस ग्रेप. ओके, एंड बेसिकली इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ वाइन. इट्स अ क्रॉस बिटवीन रिस्लिंग एंड मैडेलिन रॉयल. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिल्वाना. सिल्वाना इज आल्सो वेरी like a fruity flavor grape, because it has got a peach and passion fruit. Peach, passion fruit and thyme का यहाँ से flavor आता है. Silvana. So Riesling, Silvana and also your Muller Thurgau. Now understand this basic concept. मैंने पहले कहा था कि Germany is a cooler climate. Cooler climate में जो भी white grape पैदा होगा, all will be very fruity in nature. आप खाओगे तो आपको लगेगा कि आप एक साथ एप्पल, मैंगो, पीच, पियर्स का एक जूस पी रहे हो.
बट इफ यू ट्राई दैट सेम ग्रेप इन नासिक वैली, ये अगर नासिक वैली में हुआ, देन व्हाट विल हैपन, यू एग्जैक्टली फील लाइक कि किसी ने मुझको एसिड दे दिया है या फिर सड़ा हुआ ग्रेप जूस दे दिया है. ओके राइट, दिस इज व्हाट हैपेंड. ओके पीपल प्लीज क्वाइट, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए. ओके राइट, दैट्स कॉल्ड सिल्वाना. इसके अलावा देयर इज वन मोर व्हाइट ग्रेप व्हिच इज नोन एज, आई रिपीट अगेन दैट फेमस नेम, इट्स नोन एज गेव्यूस्त्रा माइनर. I repeat again, Gewürztraminer, Gewürztraminer. So Gewürztraminer is a kind of grape which has got a fruit flavor of your lychee, grapefruit, ginger and tangerine. And you know, due to the presence of ginger, कोई भी आप होटल में जब 5 स्टार होटल में जब आप जाओगे एज ए जॉब करने के लिए, तब अगर किसी ने आपको थाई फूड या फिर एशियन स्पाइसी एशियन चाइनीज फूड आपको दे दे, चिकन 65 लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर आपने आपसे पूछा कि इसके साथ कौन सा वाइन पेयर करना चाहिए, अगर कोई व्हाइट वाइन, आंख बंद करके आप गेवुस्ट्रामाइनर दे दीजिए. गेवुस्ट्रामाइनर is a kind of grape which is only goes well with Indian, Chinese, Thai food, Burmese food, because ये एक ऐसा एरिया है जहां पे लोग सबसे ज्यादा स्पाइसी फूड खाता है, इसलिए इस एरिया को सबसे ज्यादा वो किया जाता है. इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्नर, रुलांडर एंड मोरियो मुस्कट. कार्नर, रुलांडर एंड मोरियो मुस्कट, दिस आर योर ग्रेप वैरायटीज. ठीक है, ओके पीपल, एवरीबडी इज ओके, ये सब नाम सुनने के बाद सब सही है? यस सर. सब लोग सही है ना? ठीक है, ओके. ये सब कान में या कान में बजना नहीं चाहिए, ठीक है ना? डोंट वरी, ये सब नाम थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, सो बी ओके एंड फाइन. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन. अब आएगा आपके पास रेड वाइन, रेड ग्रेप्स. आपके रेड ग्रेप्स में आपका सबसे पहले जो यहाँ का स्टार रेड ग्रेप्स है वो है स्पैटबुरगंडर. आई रिपीट अगेन, स्पैटबुरगंडर. आई रिपीट अगेन, स्पैटबुरगंडर. स्पैटबुरगंडर इज बेसिकली नोन एज अ पिनो नोवा. पिनो नोवा का जो जर्मन है दैट इज नोन एज अ स्पैटबुरगंडर. It has got a flavor of mushrooms, cloves, and it is goes well with your pork and mushroom and also some lamb. Another red variety grape is your Don, DRON, Don. जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का डॉन मूवी था, वैसे आप इसको याद रख लीजिए, ये हमारा डॉन है. ठीक है, ड्रॉन, DRON, ड्रॉन फेल्डर. सो ड्रॉन फेल्डर. The home of this grape is Wittenberg and it's produced very thick red grape variety. All right. The next one is going to be your Trollinger. ये साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे grapes है यहाँ पे. So Trollinger is once again his home, इनका जो घर है Trollinger grape का, वो है Baden wine region में. And it also gives you lots of smoky and as well as strawberry flavor wine. Smoky and strawberry flavor wine. तो ये तो आपके थे रेड ग्रेप. सो वन इज योर स्पैटबुरगंडर, ड्रॉनफेडलर एंड ट्रोलिंगर. ओके, देखिए मैं आपको वाइन रीजन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा. देखिए मैं क्वेश्चन पेपर फिर से मैं देख रहा था, तो नेचुरली बात ये कि अगर हम ये मान ले कि ये ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है अभी, तो वाइन, डिस्क्राइब द वाइन लॉज ऑफ जर्मनी, डिस्क्राइब द वाइन रीजन्स ऑफ जर्मनी, ये 3 साल में या 4 साल में एक बार आता है, और जब वो आता है तो वो क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ हो जाता है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये आएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन. जिस क्वेश्चन में आ गया कि डिस्क्राइब द वाइन रीजन्स ऑफ जर्मनी विथ प्रॉपर एग्जांपल्स, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ पेपर. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. सो it is your call now. अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो if you think that it's feeling very tough to you, but yes, if you are an FMB interested people, then you should read this only. Okay, so as you can take a look, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे सामने एक यूरोप का मैप है और यहाँ पे रेड लोकेशन में हमारा जर्मनी है, एक साइड में फ्रांस है, एक साइड में पोलैंड है.
अब फ्रांस और जर्मनी में बहुत पहले मतलब रिलेशन बहुत ही अच्छा था, और हिटलर ने क्या किया था, पूरा फ्रांस को कवर कर लिया था, I mean, पूरे यूरोप को इसने कैप्चर कर लिया था। इसलिए कोई भी फ्रांस में जाओगे आप तो फ्रांस के वाइन में थोड़ा सा भी जर्मन टेस्ट आपको मिल जाएगा। सो व्हाट वाज दैट फेमस वाइन रीजन इन फ्रांस दैट इज क्लोज टू जर्मनी? कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? व्हाट वाज दैट फेमस वाइन रीजन जो जर्मनी के बिल्कुल पास में है, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर? यस प्लीज। Alsek. It's called Alsace, not Alsec. Alsace. It's called Alsace. Fantastic, fantastic. Who is this? Devrat, sir. Okay, great, great, fantastic, good. So that's called Alsace. So Alsace is the wine region that comes in, I mean, France, but still the people over there feels like they are from Germany only. Okay, right? Okay. So ये आपके वाइन रीजियंस है। मैं एक एक का प्रोनाउंसिएशन करूंगा। देखिए इस मैप को देखिए, सेकंड मैप को आप सही से देखिए। ये जर्मनी में एक फेमस रिवर है, उसका नाम है राइन रिवर, जिसके बारे में हमने पहले भी बुक में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में पढ़ा था। तो राइन रिवर एक ऐसा रिवर है, इसके बारे में कहावत है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो इतने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, इतने जर्मन सोल्जर्स वहां उन लोगों की मौत हुआ था। दिस एंटायर रिवर वाज टर्न्ड इनटू ब्लैक कलर, काला रंग हो गया था इस रिवर का। Okay, sorry, it's not black color, it's red color, sorry, yeah. So Rhine river, तो Rhine river के चारों तरफ ही आपके मैक्सिमम वाइन रीजियंस है। ओके, सो ये देखिए पूरा ये राइन यहां से निकला और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा पूरा एकदम एंड तक। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी निकला इधर उधर से, और सारे वाइन रीजन जो है, तो नदी का पानी बहुत मैटर करता है, जैसे हमने फ्रांस में भी देखा था। सो नदी का पानी बहुत मैटर करता है वाइन प्रोडक्शन के लिए। Okay, but it's not the river water that makes the wine best, it is also the climate, it is that also makes the best. अभी let's take an example, कल जैसे फ्रैंकफर्ट में स्नोफॉल शुरू हो गया है। अब फ्रैंकफर्ट में अगर आप जाओगे तो फ्रैंकफर्ट इज जस्ट लाइक अ प्लेन लैंड, नॉर्मल जैसे ग्वालियर है वैसा ही है अपना फ्रैंकफर्ट। तो जर्मनी एक ऐसा जगह है जहां पे प्लेन लैंड में भी, हमारे जैसे इंडिया में पहाड़ में स्नोफॉल होता है, लेकिन वहां पे प्लेन लैंड में स्नोफॉल होता है। ये कारण, दिस इज द रीजन। अब जैसे ग्वालियर में जिंदगी में कभी स्नोफॉल नहीं होगा, अगर गलती से ग्वालियर में कहीं भी स्नोफॉल हो गया तो उस दिन समझ लेना दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो उस दिन यूरोप में क्या होगा, एंटायर यूरोप विल बी फ्रीजिंग। होती है कभी नहीं हुई 10 को हुए तो Okay, please people, can somebody mute him if you can, somebody found it, okay. All right, so let's go to the next first wine region, that's called AHR, a beautiful wine region. Look at the picture, इतना सुंदर खूबसूरत जगह है ये चीज, और इट्स अ वेरी वेरी रेड वाइन डोमिनेटिंग एरिया, जहां पे आपको, अब देखिए यहाँ पे आपको बस एक सिंपल सा कहानी लिखना है। इट्स अ ब्यूटीफुल वाइन रीजन ऑन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन, जहां पे एक छोटा सा विलेज है एंड एंटायर वाइन कम फ्रॉम दैट विलेज। यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखना है, और उस मामले में तो आप मेरे से बहुत आगे हो, मुझे पता है। So this wine is basically known as a red wine from this region. The red grapes that come from these regions are known as a Spätburgunder or Portugieser. Portugieser and Spätburgunder are the red wine. It's a very wine region. अब सबसे टफ पार्ट है, यहां से जो वाइनयार्ड्स है उसका नाम है सोनेमबर्ग, लैंडस्क्रॉन एंड नुहनार। Sonnenberg, Landskron and Nuhanar, okay, and also there is something called Hainmershem. तो ये चार मैंने लिखा है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप पकड़ लेना। लैंडस्क्रोन एंड सोनेमबर्ग मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान लग रहा है, इन दोनों नाम याद कर लेना, बहुत है, बहुत, मोर देन एनफ। नोबडी इन एनी IHM college know this much of wine region. If you able to remember this, this will be great job. So Landskron and Sonnenberg, these are the two famous villages where the AHR wine comes. Next we got the another wine region. Look at this beautiful picture on the screen on the right hand side. This is your wine region which is known as a Mittelrhein. इसका नाम क्या है? Mittelrhein.
तो मिटेल शहर का नाम है, राइन है आपका नदी, सो इट्स नोन एज अ मिटेल राइन। आई रिपीट अगेन, मिटेल राइन। कितना सुंदर जगह है ये, यू कैन टेक अ लुक, इट्स स्मॉल आइलैंड, which एक स्मॉल आइलैंड, इसका नाम गांव, एक छोटा सा गांव है ये। इस गांव में वाइन मैन्युफैक्चर हो रहा है और इसके चारों तरफ से राइन रिवर जा चुका है। हमारे राजस्थान में एक ऐसा छोटा सा जगह है जहां पे ये थोड़ा सा पुष्कर एंड अलवर के साइड में अगर आप जाओगे, ऐसा छोटा सा एक आइलैंड है, व्हेन राजस्थान टूरिज्म के एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें ये फोटो आपको दिखाई देगा। ओके, so look at this beautiful landscape. The people goes over here for the holiday and all. It's known as a Mittelrhein. So Mittelrhein has got 84% of white wine. Obviously Riesling is the predominant grape, and little bit of 15.2% of your red wine that comes from this region. Okay, now the most important thing, we know this famous wine called Sekt, SCKT. Sekt is a great quality of sparkling wine, like we have in France called champagne. Italy में जैसे आस्ती स्पुमांते हैं, same way there is something called sparkling called known as the Sekt, and the Sekt is a sparkling wine that come from this area. तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि सेक्ट नाम की जो स्पार्कलिंग वाइन है ये कहां से आता है, तो पहले तो आप ये बोल दोगे कि सर जर्मनी से। जर्मनी के कौन सी जगह से आता है, तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, देन विल से इट इज नोन एज मिटेल राइन। मिटेल राइन, मिटेल राइन, आई रिपीट अगेन, मिटेल राइन। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वाइन रीजन व्हिच इज नोन एज अ मोजेल सार रूअर। नाउ मोजेल सार रूअर, लेट्स टेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल एरिया वंस अगेन। दिस इज द वाइनयार्ड्स, ये आपके छोटे छोटे वाइनयार्ड्स है। ये देखिए यहाँ पे, ये समझ लीजिए ये यहाँ पे 3 स्लैब्स है, तो ये समझ लीजिए देवराज का जमीन है, ये वैभव शर्मा का जमीन है, और ये काव्या गुप्ता का जमीन है। सब लोगों ने यहाँ पे घेरा डाल रखा है कि तू मेरे जमीन के अंदर आके ग्रेप्स मत चोरी कर लेना, ठीक है। सो ये सारे हमारे काव्या गुप्ता, आलेख भटनागर और अपना देवराज मन्ना का ये वो है, क्या बोलते हैं, जमीन है जहां पे इन लोगों ने ग्रेप हार्वेस्ट किया है। सो इसके कारण क्या होता है कि ये एक एक्चुअली इज अ प्लेट, एक ऐसा प्लेन लैंड है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे सनराइज इतना अच्छी तरह से गिरता है। दैट्स द रीजन द वाइन्स ओवर हियर become very fresh and also low in alcohol, ठीक है। and there is a mountain called Vosges mountain, ये जो mountain है, इस mountain का नाम है Vosges mountain, it happens on that. तो basically Moselle is a wine region, and Saar and Ruhr, Saar and Ruhr है, जैसे कि हमारे गंगा नदी का जैसे शाखा नदी निकलता है, वैसे राइन रिवर का भी 2 नदी है, one is Saar and one is Ruhr. The famous grape from these areas are Riesling, white wine, white grape. Müller Thurgau is once again a white wine, and the red wine is known as the Elbling. The wine vineyards जहां से यहाँ से wines आता है, those are very very easy name. ये देख लीजिए आप, जो आपको आसान लगे आप याद रख लेना। कैसल, ऑकफ्लेन, जेल, पाइसफोर्ट, ग्राच, काम खत्म, और कुछ नहीं। The next one is राइनगांव। राइन नदी के ऊपर एक छोटा सा गांव, वहां से नाम आया राइनगांव। जब मैं आईएचएम हैदराबाद में था, मैं इसको ऐसे याद रखता था। राइन नदी के ऊपर स्थित हुआ एक छोटा सा गांव, इट्स नोन एज अ राइनगांव, ठीक है। राइनगांव is once again another famous wine region in France, I mean sorry, in Germany, where the wines are made from noble rot. एंड ऑल्सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना होगा, हॉक वाइन्स, HOCK, हॉक वाइन्स आर द वाइन which comes from this area. Now जैसे कि हमारे जैसे बोर्डो वाइन्स आर द फेमस इन द वर्ल्ड, सेम वे हॉक वाइन्स आर वेरी फेमस इन जर्मनी ऑल्सो। देयर इज अ विलेज इन जर्मनी नोन एज अ हॉकहेम, देयर इज अ विलेज इन जर्मनी नोन एज अ हॉकहेम, जहां से ये राइन गांव का, आई मीन लाइक यू गेट दिस वाइन फ्रॉम देयर। Also there is something called Riesling and Spätburgunder. Also there is something called Riesling and Spätburgunder. These are the 2 grape variety which is available over there. यहाँ पे जो vineyards है, those are known as Johannesburg. So Johannesburg we know is the capital of which country? Anybody say? South Africa. That's right. Yes. So Johannesburg. Look at the name. Johannesburg.
Winkel, Hockheim, and Ostrich. These are the names of the vineyards. All right, so finish with the Rheingau. Then you go to the Rheinhessen. Rheinhessen is once again the largest wine region. The smallest wine region of Germany is AHR, and the largest wine region of Germany is Rheinhessen. Silvaner is a famous red grape in this region, and apart from that, there is something called Riesling, Spätburgunder, Muller Thurgau. All this thing is also found over here. Now, remember one thing: a great wine that comes from this area is known as, once again, please people listen carefully. It's called Liebe Frau Milch. I repeat again: Liebe, L-I-E-B, Liebe Frau Milch. Liebe Frau Milch. It's a notable international wine. It's made from a blend of your Silvaner, Riesling and Muller Thurgau. 3 ग्रेप का ब्लेंड से, 4 ग्रेप की ब्लेंड से ये बनता है. राइनेसन आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में है, जर्मनी का बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से जो वाइनयार्ड्स आता है उसका नाम है बिंजन एंड ओपेनहेम. अच्छा, ओपेनहेम नाम सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? Anybody know there is a word called Oppenheim? Oppenheim सुन के कोई फिजिक्स के कोई स्टूडेंट है तो उनको मालूम होना चाहिए, जिसका साइंस था. हाइजेनबर्ग. हाइजेनबर्ग क्या है ये? हाइजेनबर्ग, So he was a scientist and he proposed some laws in the field of physics. okay, you are absolutely right, but you didn't pronounce the name right. His name was Robert Oppenheimer. His name was Robert Oppenheimer. And who is Robert Oppenheimer? I guess he won Nobel Prize for the physics. Yeah, he is also a Nobel Prize winner, and at the same time, he is the person who have invented the atomic bomb. Who has invented the atomic bomb? Robert Oppenheimer. So Robert Oppenheimer का जो घर है वो यहाँ पे है, राइनेसन जर्मनी में. Robert Oppenheimer was German actually. He was very much influenced by गीता. You know, एक कहावत है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा था कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर ही एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बहुत कुछ कहा है. अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रह्मास्त्र, वी ऑल नो दैट अर्जुन यूज्ड टू कैरी अ ब्रह्मास्त्र और कर्ण यूज्ड टू कैरी अ ब्रह्मास्त्र. So Brahmastra is basically nothing but atomic bomb. Okay, so he got influence after reading the Gita book, and after that he invented this biggest devil on the planet, which is known as atomic bomb. Okay, so Robert Oppenheimer के नाम से उस एरिया का नाम हुआ है Oppenheim. So Oppenheim is the area जहां से ये वाइन आता है. You know why I tell this story? Just to remember this name properly. कि मुझे पता है कि इसके बाद आप जब एग्जाम के एक रात पहले ये नोट्स जब वापस ओपन करोगे तो Oppenheim जब आप देखोगे तो आपको याद रहेगा. That's why I say this nice story for you. Okay. The next one is Pulse, not very interesting wine region. That's okay. Its name is Pulse, P-F-L-S, Pulse, not Pulse. Pulse मत बोलना. Pulse का वो टॉफी आता है वो नहीं है. It's called Pulse. Pulse, P-F-L-Z. Okay, P यहाँ पे साइलेंट रहता है. बाकी सब कुछ ठीक है. यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि this wine in this region, यहाँ के जो लोग होते हैं वो ये स्कॉपिन, जो साइड में आपको ये ग्लास दिख रहा है ना, ऐसा जो ग्लास है, इस ग्लास का नाम है स्कॉपिन, SCHOPPN. वहां के लोग ऐसे ग्लास में वाइन पीता है. दे डोंट यूज दैट फेमस वाइन ग्लास लाइक रेड वाइन ग्लास और व्हाइट वाइन ग्लास. ओके, द वाइनयार्ड्स ऑफ दिस रीजन आर फ्रॉस्ट एंड बैड ड्रूकहेम. फ्रॉस्ट एंड बैड ड्रूकहेम are the two vineyards that come from this region. All right, it's called Pfalz. Next one is, then the last one is Baden. Yes, now Kavya Gupta, if you are there, so this is your main area where your black forest cake come. Baden एक छोटा सा जगह शहर है जहां से आपका black forest cake आता है, because black forest cake was first invented. The chef over there, he took a look at this snow covered black forest mountain
and that baker has invented the cake after that. This is known as the Black Forest region, and here your Baden comes. Like Baden is a wine region where the Black Forest mountain is there, and from that this thing comes. And the grape from these regions are Rulander, Riesling, Gewürztraminer, and the red varieties are Spätburgunder. वाइन्स इन दिस रीजन, यहाँ पे जितने सारे वाइन पैदा होता है ये थोड़ा सा ना स्प्रिटजिक और स्पार्कलिंग टाइप का होता है, लेकिन दीज आर नॉट नोन एज स्पार्कलिंग वाइन. ये क्या करते हैं यहाँ के लोग क्या करते हैं कि बॉटल के अंदर वापस शुगर जूस मतलब लाइक ग्रेप्स एंड शुगर को ऐड कर देता है. फॉर दैट द सेकेंडरी फर्मेंटेशन ऑल्सो हैपन इन द बॉटल बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अगर शैंपेन बॉटल का प्रेशर अगर 6 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका होगा 0.5, 0.5 या फिर 0.78. बहुत ही पतला होता है, बट इट लुक्स वेरी नाइस बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्पार्कलिंग वाइन. ओके, यहाँ के जो वाइनयार्ड्स है वो है मिशेल फील्ड, डुरबैच एंड योर जुल्सफील्ड. ओके, मिशेल फील्ड जैसे वी हैव अ स्टूडेंट कॉल्ड मिशेल फर्नांडिस, उनके नाम से यहाँ पे एक वाइन रीजन है, तो आप उनका नाम याद करके इसको याद रख सकते हो. यू कैन connect with him, that will be easy for you. Michel Fernandez, and from there you can get this wine region called Michel Field. Okay, right? So this is a very easy way you can remember. Then there is something called Durbach. Durbach is also a wine region from this area, and there's something called Zulsfeld. तो जो आपको आसान लगे इनमें से आप पिकअप कर लेना. मेरे को ये 3 आसान लगा इसलिए मैंने ये 3 ऐड किया यहाँ पे. And finally the last one, Utemburg. Utemburg also makes the red wine and white wine. The red grapes from these regions are Dornfelder, Portugieser, Mularbe, Dornfelder, Portugieser, Mularbe, and the white wines are Riesling, Müller, Thurgau and Karner. ये देखिए Utemburg इस मैप में कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट एरिया है हमारा. तो यहाँ पे क्या समस्या होता है कि ये जो ऊपर वाला रीजन है AHR, मिटलहैन, रेनगांव, मोजल, ये दीज आर स्नो कवर्ड एरिया. द मोमेंट वी गो डाउन, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, दिस इज वेरी वेरी सी साइड, यहाँ पे थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट हो जाता है. एंड फॉर दैट रीजन दिस वाइन्स व्हेन दे मेक दे बिकम स्लाइटली पिंक इन कलर. पिंक वाइन बनता है यहाँ पे बिकॉज द जूस दैट टेक्स आउट इट लुक्स लाइक अ पिंक इन कलर. And these wines are known as a Schiller wine. This wine are known as a Schiller wine. These wines are known as a Schiller wine. Vineyards from this region are Mulborn and Gundelsheim. Gundelsheim and Mulborn. Gundelsheim को आप याद रख सकते हो बुंदेलखंड के नाम से. Okay, Gundelsheim and Mulborn. Okay, right? Okay, this is Utemburg. अच्छा, Utemburg is also famous for a famous person. क्या नाम है उनका? उटेमबर्ग से हमारा दुनिया में आज जो प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे न्यूज़पेपर बुक छपता है वो इन्वेंट हुआ था पहली बार. कौन था वो आदमी? फिफ्थ स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर, इफ एनीबडी रिमेंबर. Gutenberg. क्या नाम है उसका? यस, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली, या दैट्स राइट, इट्स नेम इज एब्सोल्युटली राइट. देवराज मन्ना एंड whosoever it is. Who is the next one? Asutosh Ranjan. Yes, Author Ranjan. Beautiful answer. Okay. It's called Robert Gutenberg. Robert Gutenberg is a person who has invented the printing press, and this is the region where he comes from. Gutenberg एक जगह है जहां से वो आता है. And also our famous Bayern Munich club, football club on the planet, that also comes from this area. So this way you can remember Württemberg. I repeat again, Württemberg. देखिए नाम में कुछ नहीं है, अगर आप सिलेबल के हिसाब से इसको तोड़ दोगे यू विल नॉट फील इट टफ, बट द मोमेंट इज व्हेन वी टेक अ लुक एट दिस नेम वी फील सो बैड. दैट्स व्हाई प्लीज डू इट. Württemberg. Württemberg. That's how the name comes actually. Okay, so this is your German wine regions, and this is all about German wine. And the last one, obviously, this is known as your known as your Franken. So Franken is once again is a region where our Franconia that comes from. The German is known as a Bavaria. So Bavaria is a place in Germany which is known for the festival, not for the good quality of wine. Our famous Oktoberfest happened in this region. The wines of this region are known as a Stein wine. The famous Stein vineyard बोल के एक जगह है
वहां से ये वाइन आता है. एंड द वाइन ऑफ स्टेन और स्टेन वाइन is basically served in this flat shaped bottle. You can serve in this flat shaped bottle. Take a look at this bottle. These are very flat shaped bottle. इसका नाम है Butel. I repeat the word box Butel. I repeat the word again. Stain wine and stain wine served in box Butel. तो किसी ने अगर कहा कि box Butel क्या है, you will say it's a flat shaped bottle that comes from the Franken region of Germany where this wine is manufactured. Okay, so this is your wines of Germany. Okay, lots of short terms are there. Schiller wine क्या होता है, box Butel क्या होता है. अगर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन ना भी आए, that is not the big important thing, but what is most important is that you at least get the questions from, I mean, like short questions from there. So please read this when you are going to study the entire thing. Okay, so that's about it for the day. We will just completed the German wines. Next class, that is tomorrow, we will also complete our another wine regions, which is known as your wines of Italy. I will share the PPT tonight. Please take a look and come to the class. Okay, now I have taken the attendance. If you want to leave, you can leave. So any question now? Any question as of now? Sir, Yes, please, Aditya. Yeah. sir, इस में सर टेस्ट कैसे क्या आती है सर, क्योंकि वो तो फ्रीज होते हैं सब.